कभी कभी डर लगता है, मेरा अपना शहर कभी कभी अपना नहीं लगता है। रहती तो सालों से हूँ यहाँ, पर अपने ही शहर की ना हो पाई। Hello guys, so welcome back to my channel. I am here back with my video and with a new haircut. And मैं ये bangs बहुत टाइम से कराना चाहती थी and finally I got it. And I know मैं 2 हफ्ते से मैंने वीडियोस नहीं बनाए and मैं इसलिए नहीं बना पाई because मेरे बैक टू बैक कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे थे and I had to just I wasn't able to take out time. अभी भी इवेंट्स चल रहे हैं बट मैंने सोचा कि अब और लेट नहीं कर सकते हैं, अब आप लोगों से इंटरेक्ट करना बनता है, बहुत टाइम हो गया। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई सेलिब्रेटेड माई रिपब्लिक डे, हाउ इट वेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो बेसिकली मुझे एक इवेंट के लिए जाना था विच वॉज अराउंड 4 in the evening and I had to just prepare myself and get ready and everything related to it, and I had to go for that event in order to perform one of my poetry for City Life channel. I think I reached at the location around 2 o'clock, and then I was waiting for Kavita ma'am who called me for this event. Like I just reached early for the destination, but I thoroughly enjoyed every second of it, because when I reached the destination I just took some pictures. And then I wrote another content, or should I say one of my shairis. There was this one particular dog and there was sitting arrangement near that where that dog was, and I was really interested in sitting over there, but God, never mind. Just observing, I was just enjoying chilling because there was music playing over there, and I just observed everything over there, and it was so good to see everything happening, and such a beautiful place it was to be at. And the organizer told me that please wait and guide everyone to the place, and then I was like, okay, I can do that, and then I guided every person who was there outside to the place, because it was a bit difficult for everyone to catch up where actually the event was taking place. The event started around 4:15, and then second performance was mine, and all of a sudden Kavita ma'am, who was anchoring, she called me up, and I was like, okay, now I have to perform. And then I just went, and here you go, this was what I performed. होगा हमारे बीच रितिका, जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, वो अपनी कुछ अच्छी रचनाएं लेके आई हैं और वो क्या बताना चाहती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। And I am a second year student pursuing mass communication and journalism from बनस्थली विद्यापीठ। छोटा सा लिखा है मैंने कुछ, जो मैंने जयपुर के लिए लिखा है। आई थिंक आप सभी उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन रिलेट टू इट। मैं बड़े शान से कहती, ये मेरी जगह है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा शहर, मेरा पहला पहला प्यार है। पर कभी कभी तो अपने कहने पे ही हंसी आ जाती है। ऐसा कैसा प्यार कि अपने प्यार के बारे में ना कुछ जानती, ना अपने प्यार के बारे में कुछ पता किया कभी। कोशिशें की भी तो क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं किया कि कह सकूं हक से ये मेरा शहर है। ना वो जगहें घूमी, ना वो चीजें चखी, ना वो मस्ती मारी, ना वो पूरा दिन इधर से उधर घूमा। उड़ने का मन बहुत हुआ पर पंख कभी फहराए ही नहीं। क्या यही था मेरे शहर से मेरा प्यार? ना वो किया बोलूं हाँ ये मेरा, ये इस शहर में हर रहने वाला इंसान किया ही करता है। बस घर पे बैठे बैठे उतनी ही दुनिया घूम ली जितनी घर वालों ने घुमाई।
कौन सी जगह का क्या मजा है अपने ही शहर में, ये सिर्फ दूसरों की बातों से पता किया। तो शान से कहने पे कभी कभी डर लगता है, मेरा अपना शहर कभी कभी अपना नहीं लगता है। रहती तो सालों से हूँ यहाँ, पर अपने ही शहर की ना हो पाई। ऐसा कैसा मेरा गुरूर है कि अपने शहर से प्यार खूब है, कि ना जाने उसकी जगह पे वक्त ना बिठाने पे भी उसकी एक बुरी खबर भी मेरे कानों को ना मंजूर है, मेरे कानों को ना मंजूर है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने हमारे शहर को बयां किया है। And it was great performing over there in front of such big personalities like Arun ji and Kishore ji, who are already so good in writing. And then I even met Siddharth, who has got national award. Amazing to meet such great people. Like I thoroughly enjoyed the day. And then I met Shivani ma'am, who is part of radio for some point of time, and I met her, and she is so humble and so frank and so good to know, and I'm so happy that I have her number now. So I'm really happy about it. Got this folder by City Life, and I'm so happy about it that I got it, because it has almost everything that I needed. And this folder, then I got more things as well in it. Like this badge is also from that City Life only. I got this book as well in this folder, and I'm so happy about it, because मुझे काफ़ी टाइम से कोई पोइट्री, कोई स्टोरी की, like I just really wanted a book in Hindi or else in English, and I got it, and I'm way too happy to have it, and I will definitely let you people how it is. I got this brochure of Save Our City. Then I got this mask which has logo of Save Our City. Then I got this pen. And I got this notebook which I am currently using for noting down all those things that are in my mind. So I am way too happy to go for the event and get good stuffs, and also meeting great personalities over there. Well, this book is Anu ma'am's book. After that we had high tea time, and I had 2 cups of tea, which was yum to have. And and I even made 3 friends over there: Nikhil, Gitanjali Di, and Jyotsna, and they are amazing artists. You must check their Instagram. Like, just stalk their Instagram. They are doing wonders. Hi, my name is Gitanjali. I am ball artist, musician, singer, dancer. She is a multi-talented person, in short. And that person going over there is a 3D artist. Then I got this कुल्हड़. Like, I'm so happy to get it, because मुझे काफ़ी पसंद आ गया. वहाँ पे जो चाय वाले भैया थे, he makes such a yum चाय, जैसे मैंने बताया, मैंने 2 कप पी ली. And then I got this कुल्हड़ as well. Like, मैंने उनसे पूछा परमिशन के बाद. Okay, I didn't like मैंने बिना पूछे नहीं उठाया. So don't, if you ever want to do this, seek permission. तो मैंने permission ली, and then I just got this one, and I'm using it for tea nowadays. Then उसके बाद वो जो टी वाले भैया थे, वो so sweet and so humble. ये वो है रोज वैली है। ओके, ये जास्मिन है और कौन सी? कैमोमाइल है। ओके, और आपको कितनी तरीके की चाय बनाने आती है? मेरे को करीब 80-90 तरह की चाय बनाना। जिसको भी आना है वो यहाँ पर आए, चाय अलग अलग प्रकार की पीने के लिए। और भैया कुल्हड़ भी फ्री में देते हैं, सबको नहीं दे। मेरा ऑटो वाला, I don't know why it came at the same moment when I got my Maggi on my table, and then I just had a spoon of it and I went. Well, never mind. It was a really a great day and a great event to be part of and to perform for a channel. Like just go and perform, and it was great doing all those things. So I shouldn't say much. There are a number of other things as well that I did, and I will let you know, guys, in my upcoming videos.
So till then, please like, share, comment down below and hit the notification button and stay tuned for more amazing videos from my side on my channel. And I hope to see you guys in the next video. Till then, bye bye.